चलिए जी, ये हमने पिछली बार एंटीबॉडीज के बारे में कर रहे थे। ये एक बार दोबारा से चेक कर लो, एक कॉलम सा बना भी लो। IgA एंटीबॉडी मैंने बताया था व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉपरो एंटीबॉडी, बिकॉज IgA is present in the intestine and some of the IgA antibodies are excreted in feces. That's why it is called as copro antibody और हम इसको Ig alpha भी कह देते हैं। उसके बाद है IgD, Ig delta। Ig delta जो है it is present on the surface of the B cells। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। उसके बाद IgE एंटीबॉडीज जो है they play role in allergic reactions। ठीक है, these are present on the surface of mast cells and basophils। ठीक है, basophils क्या है, WBCs है। उसके बाद IgG स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है एंड इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। उसके बाद है IgM, इट इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी। ठीक है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। और सबसे कम एंटीबॉडी कौन सी आ जाती है, IgE, लीस्ट इन अमाउंट। ये सबसे कम एंटीबॉडी है, मोस्ट अबंडेंट है IgG एंड स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी AB इज एंटीबॉडी। लार्जेस्ट एंटीबॉडी IgM है। ठीक है, लिख लो फटाफट से, एक जो कॉलम है वो बना लो, फटाफट से एक बॉक्स बना लो और ये नोट कर लो। एग्लूटिनेशन में क्या आ जाता है कि एक दूसरे के साथ माइक्रोब्स चिपक जाते हैं, इमोबाइल हो जाते हैं, भाग नहीं सकते और फैगोसाइट्स उनको पकड़ के खा जाता है। ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन क्या है कि जो एंटीबॉडीज है दे कोट द सरफेस ऑफ एंटीजन, दे कोट द एंटीजन एंड प्रेजेंट दीज एंटीजन्स टू द फैगोसाइट। प्रेसिपिटेशन, अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है एंटीजन तो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, उसको सॉल्यूशन में से सेपरेट करते हैं और उसको जो है फिर क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट कर देते हैं। सॉल्यूशन से अलग हो जाना तो प्रेसिपिटेट हो जाना, और जब प्रेसिपिटेट हो जाएंगे तो फिर एंटीजन इमोबाइल हो जाएंगे और फिर फैगोसाइट्स उनको खा जाएंगे। उसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइज, ये एंटीबॉडीज क्या करती है, they causes neutralization of bacterial toxins। so antibodies जो bacterial toxins को neutralize करती है या फिर कुछ वायरसेस को सेल्स के साथ अटैच नहीं होने देती, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और यहाँ पे थोड़ा सा समझो कि जब, साथ साथ लिख लेना कि अगर एग्लूटिनेशन है तो एंटीबॉडीज को हम बोलते हैं एग्लूटिनिन्स। जब ऑप्सोनाइजेशन है एंटीबॉडीज आर कॉल्ड एज ऑप्सोनिन्स, प्रेसिपिटेंट्स एंड न्यूट्रलाइजेशन को बोलते हैं एंटीटॉक्सिन। दीज आर एंटीटॉक्सिन। करो ये कर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। क्या है ये, ध्यान से देखो। क्लोन ऑफ सेल्स which produce clone of similar antibodies against specific antigen। वैसे तो हमारी बॉडी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ही बनती है,
अगर एक पर्टिकुलर एंटीजन गया, उसने पर्टिकुलर बी साइट्स को एक्टिव किया, उन्होंने डिवाइड करके क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल्स बनाए जो एक जैसी एंटीबॉडीज बनाए, वो भी। बट यहाँ पे हम आर्टिफिशियल मेथड की बात कर रहे हैं कि कैसे एक टाइप की एंटीबॉडीज बनती है। तो इसमें प्रोड्यूस्ड बाय एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बाय प्रोड्यूस्ड बाय हाइब्रिडोमा, या हम कहेंगे फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय, थोड़ा सा और कर लो, फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बाय कौन से साइंटिस्ट का नाम है कोहलर एंड मिल्स। इन्होंने प्रोसीजर क्या है, कैसे बनाई, सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट है माइस आर इंजेक्टेड विद स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, उसका कुछ दिनों में इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा। उसके बाद है इट्स क्लीन हैविंग एक्टिव बी सेल्स अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन इज एक्सट्रैक्टेड। उसकी स्क्रीन को बाहर निकाल। उसके बाद माइलोमा सेल्स, माइलोमा सेल्स क्या है, दीज आर कैंसर सेल्स। माइलोमा क्या होता है, कैंसर सेल्स ऑफ बोन मैरो। माइलोमा सेल्स आर टेकन, ठीक है, विच कैन प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब है डिवाइड कर सकते हैं, विच कैन प्रोलिफरेट क्विकली but cannot produce antibodies. माइलोमा सेल्स है कैंसरस बी सेल्स हम कह सकते हैं। These are कैंसरस बी सेल्स, वो ले लिए जो डिवाइड तो कर सकते जल्दी 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 जल्दी, बट एंटीबॉडीज नहीं बना सकते। तो अब दो चीजें ले ली, इधर स्प्लीन में से बी सेल्स ले लिए जो एंटीबॉडीज बना सकते हैं, और इधर से माइलोमा सेल्स ले लिए जो बहुत जल्दी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड है स्प्लीन सेल्स जिसमें बी सेल्स पड़े हैं, एंड myeloma cells are mixed in culture medium। ठीक है, और ये सेल्स बेटा, ये दोनों क्या किए हो गए, दे फ्यूज, और इन्होंने क्या बनाया, हाइब्रिडोमा सेल्स। और इन हाइब्रिडोमा सेल्स की प्रॉपर्टी है दैट दे डिवाइड क्विकली, ताकि एक बहुत बड़े सेल्स पॉपुलेशन बना ले, देन दे प्रोड्यूस
स्पेसिफिक एंटीबॉडी। तो इस तरह से बहुत थोड़े समय में एक टाइप की बहुत सारी एंटीबॉडीज बन जाएंगी, जिनको हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इज इट ओके? तो पहले ये लिख लो, फिर मैं क्लास में लाइन लिखवाऊंगी आपको। hybridoma cells are grown in specific culture media. Specific culture medium in which only hybrid cells या hybridoma cells grow. In which only hybridoma cells can grow. The unfused cells, चाहे वो माइलोमा सेल्स है, चाहे वो स्प्लीन सेल्स है, unfused cells, they die in this specific medium. They die in this specific medium. और मैम हाइब्रिडोमा सेल्स इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं, किसी और हाइब्रिडोमा हम इधर ही बात करते हैं, और कहीं हम, मेरा मतलब फ्यूजन तो हम कई जगह दिखाते हैं, बट टर्म हाइब्रिडोमा हम लैब्स में ही काम करते हैं। और मैम जो अर्लियर स्प्लीन सेल्स थे उनकी मतलब क्लोनिंग पावर इतनी नहीं थी, मतलब कि क्लोनिंग पावर थी ही नहीं उनमें। बेटा देखो, क्लोनिंग थी तो थी, बट हमने बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज एक टाइम में बनानी है। यस तो इतने नहीं मैम, इनकी तो एक स्लो डिवीजन थी। यस मैम। नेक्स्ट आ जाइए, यूजर्स ऑफ मैप्स। These are used for the treatment of several diseases such as, मैम these are monoclonal antibodies के क्या uses है? These are used in the treatment of several diseases such as sexually transmitted diseases, various bacterial diseases, diagnosis of cancer at an early stage, diagnosis of cancer at an early stage, and treatment of various autoimmune diseases. अभी हम करेंगे, and treatment of various autoimmune diseases as some of the antibodies suppresses specific T cells. T cells मतलब T lymphocytes। अभी हम autoimmune diseases करेंगे तो फिर आपको पता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। पहले समझो, फिर हम बात करते हैं आगे। अगर कोई पैथोजन हमारे अंदर गया, कोई एंटीजन हमारे अंदर गया, और हमारे इम्यून सिस्टम ने खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की, एंड वी गेट क्योर्ड फ्रॉम दैट डिजीज, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या है? अगर रेडीमेड एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में डाल दें, जैसे अब जब हमें चोट लग जाती है, हम सड़क पे गिर गए, हमें चोट लग गई, तो हम कहते हैं कि टेटनस का इंजेक्शन लगा लो। तो उसमें क्या होता है, जो हम इंजेक्शन लगाते हैं उसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज है,
ठीक है, जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी। मदर्स मिल्क, एक छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न है, उसको मदर्स मिल्क के थ्रू आईजीए एंटीबॉडीज मिल रही है, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव इम्यूनिटी है जब हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाती है अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक एंटीजन, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। तो लिख लो, फर्स्ट इज एक्टिव इम्यूनिटी, when our when our own body produce antibodies against specific antigen, against specific antigen, when it Can you repeat? when our own body produce antibodies against specific antigen, when gets exposed to that antigen, when gets exposed to that antigen is called as active immunity. Active immunity is a slow process. Active immunity is a slow process and takes time to become fully responsive, to become fully responsive. It is further of two types. It is further of two types, natural and artificial. First है natural active immunity. Then antigen, when specific antigen enters in our body naturally, ठीक है, causes disease and activates our immune system. This immune system produce specific antibodies which overcomes infection. This is called as natural active immunity. For example, infection by chickenpox virus gives lifelong natural activity. या कोई भी हमें इन्फेक्शन हो जाए उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम उसको ठीक करे, तो दैट इज नेचुरल एक्टिविटी। और उसके बाद आ जाता है बेटा, तुम लोग पहले फिर लिखने में जो रह जाएगा आर्टिफिशियल। आपने पूरा लिखना है, एआई नहीं लिखना है, नहीं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा लगेगा, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ऐसा नहीं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, इसमें क्या है, बाय वैक्सीनेशन।
weak or dead antigens are injected. ये जो वीक या डेड एंटीजेंस है कैन नॉट कॉज डिजीज नहीं करते, बट एक्टिवेट our immune system to produce antibodies and memory cells against that antigen. यहां पर भी हमारी बॉडी ने खुद एंटीबॉडीज बनाई, बट एंटीजन नेचुरली नहीं आया, एंटीजन हमने आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. लिखो जरा जल्दी से. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा पैसिव इम्यूनिटी. राइट डाउन द इम्यूनिटी इन विच ready-made antibodies acts in our body या enters in our body. Ready-made antibodies enters in our body. It is further of two types. First, a natural passive immunity. For example, the newborn child receive natural antibodies from the mother through milk. Can you repeat? For example, the newborn child receive natural antibodies from mother through milk. Second point इसी में लिखिए natural passive. For example, some of the antibodies passes from mother to fetus. Some of the antibodies passes from mother to fetus through placenta. ये है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. नेक्स्ट आ जाइए आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. फॉर एग्जाम्पल मैम एंटीबॉडीज का हमने किया नहीं था, दे कैनॉट क्रॉस प्लेसेंटा. बेटा सारी नहीं, आईजीजी तो मैंने बताया था दे कैन क्रॉस प्लेसेंटा. यस. नेक्स्ट आ जाइए आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. फॉर एग्जाम्पल एंटी स्नेक विनम has antibodies which are injected, है ना. ये कसौली में बनती है बेटा. एक तो रेबीज की बनती है, शायद कसौली में रेबीज की बनती है, स्नेक की तो नहीं. Anti-snake venom consists of antibodies which are injected in the patient with snake bite. Second आ जाइए बेटा anti-tetanus ATS, anti-tetanus serum, SERUM, anti-tetanus serum. It has antibodies prepared in the horse. And are then injected in the people
suffering from some injuries. Suffering from some injuries. एक आ जाता है बेटा ADS, एंटी डिप्थीरिया। मैम सफरिंग फ्रॉम some injuries. Injury हो जाए. Another is ADS, anti diphtheria serum has antibodies against diphtheria bacteria. ADS is prepared in sheep. ADS is prepared in sheep. That is artificial passive immunity. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, तो ये हो गया एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. नेक्स्ट टॉपिक आ जाएंगे इम्यून रिस्पॉन्स. इम्यून रिस्पॉन्स बेटा, जब कोई एक इंफेक्शन पहली बार हो, लेट अस से चिकन पॉक्स की इंफेक्शन पहली बार हो, तो उस टाइम चिकन पॉक्स होगा. हो सकता है स्वीयर फॉर्म में भी हो, काफी सारा हो. ठीक है, बुखार भी आए, साथ में वो बहुत सारे पस्ट्यूल्स हो जाते हैं, वो भी निकले, पस भी भरे, है ना, ये सब प्रॉब्लम हो. एक बार चिकन पॉक्स हो गया, दोबारा से कभी जिंदगी में कभी चिकन पॉक्स का वायरस दोबारा से एंटर किया, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्विक एक्टिवेशन होगी उसमें, ड्यू टू मेमोरी सेल्स. दैट इज इंटेंसिफाइड एक्शन ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स. Immunostic response of the immune response is called as secondary immune response, right? So next आ जाइए immune response. It is of two types. It is of two types: primary immune response and secondary immune response. Primary immune response and secondary immune response. फर्स्ट आ जाइए प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स. when the antigen enters in our body for the first time. When the antigen enters in our body for the first time, comma, the initial slow activation of the immune system is called as the initial slow and delayed भी कर लीजिए, and delayed activation of the immune system is called as primary immune response. Is called as primary immune response. ठीक है. ड्यू टू स्लो एक्शन, सेकेंड पॉइंट लिखना है, ड्यू टू स्लो एक्शन, कॉमा, द इनिशियल या द फर्स्ट टाइम एंट्री ऑफ द पैथोजन कॉज द डिजीज. मैम रिपीट करना. ड्यू टू स्लो एक्शन of the immune system, comma, the first time entry of the pathogen cause the disease. But it also stimulates
but it also stimulates formation of memory cells. But it also stimulates formation of memory cells. ठीक है जी. उसके बाद आ जाइए सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. It is based on the property of acquired immunity. It is based on the property of acquired immunity that it stores the memory of antigens entering in our body. It stores the memory of antigens in our body. Second point लिखिए. Therefore, when the same antigen enters in our body again, comma, the memory cells quickly recognize these antigens. The memory cells quickly recognize these antigens and causes quick activation of the immune system. This highly intensified, full stop करके, this highly intensified and anamnestic response of the immune system is called as secondary immune response. अब आ जाता है बेटा, यहाँ पे एक टर्म है इनएमनेस्टिक, है ना. ये एनसीईआरटी में दी हुई है, इसलिए मैंने स्पेसिफिक लिख दिया. तो इसका ब्रैकेट में बॉक्स में रेड पेन से लिख लो. इनएमनेस्टिक क्या बात है? इनएमनेस्टिक का मतलब है रैपिड रीअपियरेंस ऑफ द एंटीबॉडीज. इनएमनेस्टिक, इसका मतलब क्या है? रैपिड रीअपियरेंस ऑफ द एंटीबॉडीज in the blood due to previous memory. इसको हम कहते हैं इनएमनेस्टिक. So secondary immune response is anamnestic response. ठीक है जी. और फिर एक स्टार डाल के पॉइंट लिख लीजिए. Secondary immune response depends on the lifespan of the memory cells. For example, memory cells of chickenpox, measles, polio, tuberculosis are lifelong. Whereas the lifespan of memory cells such as influenza, common cold, etc. are short-lived. इसलिए एक बार कोल्ड हो जाए तो दोबारा भी हो जाता है महीने बाद. Is short-lived. For example,
Vaccine of typhoid is effective for 1 or maximum of 2 years. Vaccine for typhoid is effective for 1 or 2 years. या आज टाइफॉइड हो जाए तो साल तक नहीं, कई बार साल के बाद फिर हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज इम्यून रिस्क. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. Vaccine for typhoid is 1 or 2 years. 1 or maximum of 2 years. नेक्स्ट हम आ जाते हैं वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन इज सिंपली इंजेक्टिंग द वैक्सीन. Vaccination is simply the process of injecting the vaccine. उसके बाद है immunization, making an organism immune or resistant to specific disease by injecting a vaccine. This is called as immunization. It is based on the property of our immune system to store the memory of the antigen. ठीक है जी. तो अब हम आ जाते हैं बेटा टाइप्स. अच्छा, एक और पॉइंट लिख लीजिए. Vaccination provides both passive immunity as well as active immunity. Passive immunity as well as active immunity. नेक्स्ट आ जाती है टाइप्स ऑफ वैक्सीन. वैक्सीन्स में हम क्या डालते हैं बेटा? या तो हम एंटीजन लिया, उसको हमने हाई टेम्परेचर पे या पीएच पे या कुछ केमिकल्स के साथ हमने उसको इनएक्टिवेट कर दिया. ठीक है, उसको वो पैथोजन डिजीज नहीं कॉज कर सकता, बट इट कैन एक्टिवेट अवर इम्यून सिस्टम, प्रोड्यूस द मेमोरी टी सेल. ठीक है, एक तो ये है. दूसरा है हमने एंटीजन को डेड कर दिया. डेड एंटीजन है which can produce the disease, which cannot produce the disease but can activate our immune system. तीसरा पार्ट है हमने पूरा एंटीजन नहीं डाला, हमने बैक्टीरिया लिया या वायरस लिया, उसको एक हमने पर्टिकुलर पार्ट जो है वो हमने सेपरेट कर लिया. ठीक है, वो पार्ट जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है. डिजीज कॉजिंग पार्ट हमने उसका रिमूव कर दिया, सिर्फ वो पार्ट जो हमारे एंटीजन को एक्टिवेट कर सकता है वो पार्ट हमने एंटीजन में से निकाल लिया और उसकी वैक्सीन बना दी. ठीक है, एक आ जाता है डीएनए टेक्नोलॉजी से. डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं बेटा? एंटीजन की स्पेसिफिक जीन लेते हैं. एक एंटीजन है, बैक्टीरिया है या वायरस है या फंजाई है, कुछ भी है, उसकी हमने स्पेसिफिक जीन ली, उस जीन को हमने यीस्ट या बैक्टीरिया में डाल दिया. दैट विल प्रोड्यूस द प्रोटीन. दैट प्रोटीन इज एंटीजेनिक. एंटीजेनिक मीन्स कैन नॉट कॉज द डिजीज बट कैन एक्टिवेट अवर इम्यून सिस्टम. this protein is now used as the vaccine. ठीक है, हम जल्दी से पहले ये लिखते हैं. तो
फर्स्ट आ जाइए, डेड एंटीजन और वीक एंटीजन. डेड एंटीजन or weak antigen is used as the vaccine because Ma'am, repeat करना. dead or the weak antigen is used as the vaccine as it cannot cause disease, but can activate our immune system. For example, Sabin polio vaccine. ये बेटा बाय बर्थ इंजेक्ट की जाती है, इंजेक्टेबल, ओरल नहीं है ये. Another is MMR, vaccine against measles, mumps and rubella. रूबेला को हम जनरली जर्मन मीजल्स भी कह देते हैं. Sabin polio vaccine. Another example is MMR. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा. अच्छा, इसमें ही एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, दैट इज ओपीवी. ओपीवी में ओरल पोलियो वैक्सीन. सेबिन पोलियो वैक्सीन में किल्ड है, ओपीवी में वीकंड है. अनदर इज बीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस. डीपीटी का इंजेक्शन लगाते हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस. पर्ट्यूसिस होती है काली खांसी. डिप्थीरिया को कॉमनली बोलते हैं गलघोटू एंड टेटनस. डीपीटी स्पेलिंग किसकी बेटा? पर्ट्यूसिस की PERTUSSIS. ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा टॉक्सॉइड्स. नेक्स्ट इज टॉक्सॉइड. These are inactive toxins. These are inactive toxins of the pathogens which can activate our immune system. For example, vaccine for tetanus. ATS नहीं है बेटा, दिस इज वैक्सीन फॉर टेटनस. जब बच्चा पैदा होता है तो उसको इंजेक्ट करते हैं. मैम, हाँ जी, मैम इसके आगे क्या बोला था आपने? पैथोजेंस विच कैन. इसमें टॉक्सॉइड में यस मैम. these are the inactive toxins produced by some pathogens such as bacteria which can activate our immune system. नेक्स्ट आ जाइए, सब यूनिट वैक्सीन. These are the part of the pathogen. These are not complete pathogens. These are the subunits or part of the pathogen
which when injected cannot cause the disease, but can activate our immune system. ठीक है, और नीचे रेड पेन से लिख लो पैराग्राफ करके, the vaccines activate immune system, comma, generate B and T cells, memory cells. B and T memory cells, and thus helps in providing secondary immunity. नेक्स्ट आ जाइए, एंटीटॉक्सिन्स। नेक्स्ट वैक्सीन्स में आ जाता है एंटीटॉक्सिन्स। These are the ready-made antibodies. Which are injected in case a person requires antibodies quickly. For example, ATS, anti-snake venom, etc. मैम फर्स्ट एग्जांपल कौन सी थी? ATS, anti-tetanus serum, ATS, ADS, anti-snake venom. So these antitoxins provide passive immunity. नेक्स्ट आ जाता है बेटा DNA वैक्सीन। These are the vaccines produced by DNA recombinant technology. In this procedure, the specific genes from the pathogens, GENES, from the pathogens are taken and are introduced in the genome of bacteria or yeast. Full stop करके, these recombinant microbes grow in the tissue culture and produce specific antigenic protein of the introduced gene या of the foreign gene जो उसमें इंट्रोड्यूस की गई थी। मैम एंटीजेनिक, These produce antigenic protein of the foreign gene.
these antigenic proteins cannot cause, these antigenic proteins are used as vaccine. These antigenic proteins are used as vaccines when introduced in the humans, they cannot cause the disease, but activate our immune system. Such vaccines are produced as large industrial scale. Such vaccines are produced at large industrial scale. For example, vaccine for hepatitis B. Vaccine for hepatitis B. Okay. So these are the types of vaccine. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एलर्जीज. मैम हाँ जी बेटा. जब वैक्सीन मतलब इंजेक्ट करते हैं तब शायद फीवर भी होता है ना. थोड़ा सा तो बॉडी में, हमेशा नहीं. ये जो हम इनएक्टिव पैथोजन या फिर किल्ड पैथोजन या कई बार हम कहते हैं वीकेंड पैथोजन, ये जब डालते हैं तो तब कई बार जो है वो टेम्परेचर हो जाता है. ठीक है, कई बार वो पैथोजन थोड़ा सा एक्ट किया, ठीक है, तो पैथोजन हो जाता है, तो टेम्परेचर हो जाता है. बट वो एक आधे दिन में ठीक हो जाता है, ज्यादा नहीं, और जरूरी नहीं कि वो भी कई बार हो जाता है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एलर्जीज. एलर्जीज जो है बेटा, ये हमारे इम्यून सिस्टम में खराबी है. ये एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है. हाइपर सेंसिटिव इम्यून सिस्टम है किसी का. ठीक है, जरा सा कुछ आया वो एकदम एक्टिवेट हो गया. ये नहीं देखा कि इसका मेरी बॉडी को कोई नुकसान तो है ही नहीं. जैसे पोलन ग्रेन्स अंदर गए, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया. किसी को स्पेसिफिक चीजें खाने से एलर्जी हो जाती है, किसी को स्पेसिफिक मेटल से एलर्जी है. तो एलर्जीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप. ठीक है, तो एलर्जीज पहले ध्यान से सुनना है कि है क्या. एलर्जीज में क्या होता है बेटा, हाइपर सेंसिटिविटी है इम्यून सिस्टम की. तो इसमें इम्यून सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड, IgE एंटीबॉडीज जो है वो बनती है. ये क्या करते हैं, बर्स्टिंग ऑफ mast cells and basophils, release histamine. हिस्टामिन क्या करता है, वासोडायलेटर, या फिर इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट induces formation of mucus. और म्यूकस क्या करता है, इसको ब्लॉक्स ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. पूरे नहीं, कुछ कुछ ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण डिफिकल्ट ब्रीदिंग such as in asthma,
डिफिकल्ट ब्रीदिंग होगी तो कफिंग भी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये डिजीज के कारण भी हो जाता है, जैसे आजकल कोरोना वगैरह के कारण भी है, बट ये एलर्जीज के कारण भी हो जाता है, ठीक है। वासोडायलेटर, स्किन में अगर कोई एलर्जी हो गई है तो वासोडायलेटर, लॉट ऑफ ब्लड फ्लो उस रीजन में, जिसके कारण क्या होता है, रेडनेस आ जाएगी। मोर लिम्फ, अगर बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो है तो मोर लिम्फ, जिसके कारण क्या है, स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग एंड ईचिंग, क्योंकि कुछ केमिकल्स भी है, ठीक है। एंड एलर्जीज कैन बी ट्रीटेड बाय एंटीहिस्टामिन, हिस्टामिन को जो न्यूट्रलाइज करे। उसके बाद एड्रेनालिन हार्मोन है। अनदर इज, हम स्टीरॉयड कह देते हैं कि स्टीरॉयड हार्मोन कॉर्टिसोल, ठीक है। और एक चीज और कि अगर पूरी बॉडी में एलर्जी हो जाए, क्लियर एलर्जी ऑफ होल बॉडी, इससे क्या होगी, ऑल ब्लड वेसल्स dilated, lowering of blood pressure, और इतना लो हो जाता है may cause death if not treated immediately, ठीक है। इसको हम कहते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। इसको हम यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज, मैं ऊपर लिख देती हूँ, एलर्जी ऑफ द होल बॉडी इज कॉल्ड एज एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो सबसे पहले तो लिखो एलर्जीज क्या है। फर्स्ट राइट डाउन एलर्जीज, the exaggerated response, the exaggerated response of the immune system, of the exaggerated या hypersensitive हम कह सकते हैं, exaggerated or hypersensitive response of the immune system to certain harmless antigens, to certain harmless antigens produce allergies. The substances which produce allergies, the substances which produce allergies are called as allergens. और प्रोसेस आप ये लिख लो फटाफट से, इम्यून सिस्टम, दिस इज प्रोसेस, immune system activated by allergens produce IG antibodies. आगे आके लिखो, देखिए। So these are the common type of allergies. hay fever पोलन से, अस्थमा आपको पता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एलर्जी है। एनाफाइलेक्टिक शॉक मैंने आपको बताया, एनाफाइलेक्टिक शॉक
may be caused by injection of penicillin. पेनिसिलिन यू नो एंटीबायोटिक है, कुछ लोगों को पेनिसिलिन से एलर्जीज होती है और कई बार उनको बाई चांस किसी को ना पता हो, पेनिसिलिन अब तो वैसे बहुत आउटडेटेड ये एंटीबायोटिक है, बट फिर भी पेनिसिलिन का इंजेक्शन दे दें तो सारी बॉडी में एलर्जी होकर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है जी, तो बेटा आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट टाइम है ना थोड़े से डिजीजेस और नेक्स्ट टाइम हम ड्रग एडिक्शन भी करेंगे, थोड़ा सा इसका रह गया है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, एंड वी विल डू ड्रग एब्यूज नेक्स्ट टाइम। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो है हम ड्रग एब्यूज तक खत्म कर लें। इज इट ओके? मैम इसके बाद कितना चैप्टर बचा है? इसके बाद बस फिर डिजीजेस वाला, मेरा मतलब नेक्स्ट मंडे तक खत्म हो जाएगा बेटा, कोशिश करते हैं मंडे या वेडनेसडे तक। ठीक है, यस मैम। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा।